kindly like, share and subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. Hello everyone, welcome to EDUNOM MEDIA. I'm Lambodar, career counselor and admission guidance expert. Today I'm talking about Neet expected cutoff for private medical college in 2019, specifically for MBBS admissions. I'm getting so many calls, so many emails also regarding सर मेरा अगर इतना नीट में स्कोर आ रहा है तो कौन सा कॉलेज मेरे को मिलेगा. Dear students, I will cover up each and everything in this video. Specifically कितना नीट स्कोर में कौन सा प्राइवेट कॉलेज आपको मिल सकता है एंड प्राइवेट कॉलेज का जो काउंसलिंग इस बार कैसे होगा एंड क्या फी स्ट्रक्चर है स्टेट वाइज कॉलेज वाइज. आई विल कवर अप ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो. Kindly watch this video till end. You will got to know each and everything in 2019 expected cutoff for private medical colleges. Let's start with deemed universities medical colleges across the India. उनका क्या कटऑफ जाएगा, क्या फी स्ट्रक्चर है. It's talking about Kasturba Medical College. They have two campuses. One is Manipal and Mangalore. I'm expecting in 2019 the cutoff will be around 450 plus. That means for Kasturba Medical College Manipal 465 plus, Mangalore 450 plus. This is for general category. I'm just informing you in private college there is no quota. General quota and NRI or management quota is there. कोई जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में OBC SC ST कोटा होता था, प्राइवेट कॉलेज में ऐसे कोई कोटा नहीं है. अगर आपका जनरल कैटेगरी है तो आपको 450 प्लस में KMC मणिपाल और मैंगलोर आपको मिल सकता है. सेकेंडली KLE यूनिवर्सिटी बेलगांव, उनका भी कट ऑफ अगेन 440 टू 450 प्लस. JSS मैसूर अगेन 430 टू 440 प्लस. KS हेगड़े मेडिकल कॉलेज, येन्नोपया मेडिकल कॉलेज, सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज, दीज आर जो कट ऑफ इट विल वैरी. कैंट एक्सपेक्ट बट अगेन 400 प्लस. अगर आप 400 प्लस में हैं so you can get a chance in this deemed university medical college in Karnataka. Let's talk about the fee structure of MBBS college in Karnataka, specifically for deemed universities. I'm just highlighting about 2018 MBBS fee structure क्योंकि 2019 का अब तक आया नहीं, मैं 2018 का भी हाईलाइट करूंगा. Let's talk about Kasturba Medical College, Manipal and Mangalore. The fee structure will be around 11,24,000 per year. KLE University Belgaum, there the fee structure will be around 15,50,000. JSS Medical College 14,71,000. Devraj Medical College Kolar, again the fee structure will be around 9 lakh per year. Siddhartha Medical College Tumkur, the fee structure will be around 15,65,000. Yennopoya Medical College Mangalore, the fee structure will be around 16 lakh per year. BM Patel Medical College Bijapur, again the fee structure will be around 15 lakh plus. These are the fee structure of Karnataka deemed university medical college. Let's talk about Maharashtra deemed universities college, about the fee structure and about the cutoff in all these colleges. Let's talk about PIMS Loni, Datta Megha, the cutoff will be around 420 plus. And Bharatiya Vidyapith and DY Patel and Krishna Medical College, फी स्ट्रक्चर काफ़ी हाई है, इसीलिए जो कट ऑफ जाएगा यू कैन से 300 प्लस में भी आपको एडमिशन मिल सकता है. DY पटल मुंबई, फी स्ट्रक्चर विल बी अराउंड 25 लाख पर ईयर. दैट मीन्स आपका जो ये महाराष्ट्र का जितना भी कॉलेजेस हैं, फी स्ट्रक्चर इज टू हाई. बिकॉज ऑफ फीस इज टू हाई, जो कट ऑफ है 250 टू 300 में भी यू कैन गेट ए चांस इन महाराष्ट्र. I'm just highlighting about the fee structure in 2018 MBBS colleges in Maharashtra. Let's talk about Bharatiya Vidyapith Sangli campus. The fee structure will be around 17,30,000. Bharatiya Vidyapith Pune 18,43,000. DY Patel Medical College Navi Mumbai. The fee structure will be around 25,75,000. DY Patel Medical College Pune 23 lakh. DY Patel Medical College Kohalapur 22 lakh. Mahatma Gandhi Mission Medical College Aurangabad and Navi Mumbai, the fee structure will be around 20 lakh. Krishna Institute of Medical College Karat, the fee structure will be around 22 lakh. Datta Megha Institute of Medical College Wasda
17,15,000. Rural Medical College, PIMS University, Loni, fee structure will be around 10,05,000. These are the list of colleges in Maharashtra. The expected cutoff are already highlighted, and these are the fee structure. And other deemed universities like Sri Ramchandra Medical College, Mahatma Gandhi Medical College, Pondicherry, Balaji Medical College, SCS Medical College, Sabita Medical College, Sumandi Medical College, Gujarat, MMU Ambala, Maharishi Markandeya University Ambala, Santosh University Ghaziabad, Kalinga Institute of Medical Science, KIT University Bhubaneswar, SOM Hospital Bhubaneswar. The expected cutoff, if we're talking about specifically in KIMS University, the expected cutoff will be around 430 plus, and SOM Hospital 380 plus, Sri Ramchandra Medical College 340 plus, Balaji Medical College and Mahatma Gandhi Medical College 320 plus में आपको मिल सकता है. अगर आपका नीट में इतना स्कोर है, you can get a chance. MMU Ambala and Santosh Medical College, the cutoff will be around 320 to 350 plus approximately expected cutoff. These are the deemed universities expected cutoff. If we're talking about the fee structure of these colleges, fee structure, if we're talking about MMU Ambala almost 15 lakh, Santosh Medical College Ghaziabad 21 lakhs, SCS Medical College Hospital Chennai 21 lakh, Chettinada Hospital and Research Institute Kanchipuram 22 lakh per year, Meenakshi Medical College and Research Institute Kanchipuram 18 lakh 50,000, Sabita Medical College and Hospital 12 lakh, Sri Balaji Medical College and Hospital 23 lakh 50,000, Sri Ramchandra Medical College and Research Institute 22 lakh, SRM University Kanchipuram 22 lakh 50,000, Vinayak Mission Medical College Salim almost 22 lakh, Kalinga Institute of Medical Science, the fee structure around 12 lakh per year, and SOM Hospital Bhubaneswar 17 lakh 90,000 per year. Sumandi Vidyapith University, the fee structure will be around 15 lakh 95,000 per year. These are the fee structure of deemed universities and the expected cutoff. Let's talk about state-wise expected cutoff and how counseling will be happen. Dear students, जितना भी काउंसलिंग प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का जो एडमिशन होगा, ऑल स्टेट गवर्नमेंट विल कंडक्ट देयर काउंसलिंग्स. लेट्स टॉक अबाउट कर्नाटका. कर्नाटका का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन डोमिसाइल ऑफ कर्नाटका 480 टू 85 प्लस. दैट मीन्स अगर आपका 480 टू 485 प्लस है नीट में, दैट मीन्स यू आर एलिजिबल टू गेट ए एडमिशन इन कर्नाटका मेडिकल कॉलेज. द फी स्ट्रक्चर विल बी अराउंड 6,80,000 पर ईयर. काफी नॉमिनल फीस है इन कर्नाटका. लाइकवाइज अपार्ट फ्रॉम कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश. महाराष्ट्र में एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है, अगर आपका डोमिसाइल महाराष्ट्र का है देन यू कैन अप्लाई. जिसका महाराष्ट्र का डोमिसाइल है उनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा इन महाराष्ट्र में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 410 टू 420 के आसपास जाएगा. कभी एक्सेप्शनल केस में 360 प्लस जाता है, बट एवरेज आप मान के चलो नीट में 420 के आसपास जाएगा. The fee structure of Maharashtra private medical college will be around 6 lakhs to 10 lakhs. Approximately, it will vary from college to college. Likewise, in Madhya Pradesh also same structure. Fee structure will be almost 6 to 8 lakhs. Expected cut-off in Madhya Pradesh, जिसका मध्य प्रदेश का डोमिसाइल है, उनका expected cut-off 350 to 380 plus. अगर आपका 350 to 380 plus है, along with MP का डोमिसाइल है, then you can apply in MP, you can get a college in MP private medical college. अगर आपका डोमिसाइल नहीं है तो 480 प्लस में आपको प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है at the last moment. Likewise, if you talking about North India में like उत्तराखंड, हिमालय मेडिकल कॉलेज एंड गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज, उनका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा रहा है, उत्तराखंड में एक मेजर प्रॉब्लम अगेन डोमिसाइल का है. 50% सीट जो है उत्तराखंड डोमिसाइल स्टूडेंट्स को है, रिमेनिंग 50% सीट जो है रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए. अगर आपका उत्तराखंड का डोमिसाइल नहीं है तो दैट मीन्स आपका 440 प्लस कट ऑफ जाएगा इन दिस टू कॉलेज. अगर आपका उत्तराखंड का डोमिसाइल है 400 प्लस में आपको एडमिशन मिल सकता है ये प्राइवेट कॉलेज में. लाइकवाइज इन यूपी का ऑलमोस्ट 15 प्लस मेडिकल कॉलेज आर देयर. Again, the fee structure will be vary 9 lakhs to 18 lakh per year. Last year जो कट ऑफ गया था काफी कम गया था, 170 प्लस में भी नीट में आपको एडमिशन मिल गया था. I'm talking about जनरल कैटेगरी.
अगर आपका ओबीसी कोटा है, क्योंकि वहाँ पे कुछ माइनॉरिटी कोटा भी है, तो माइनॉरिटी कोटा में स्कोर थोड़ा कम गया था। अगर एवरेज मान लोगे, एवरेज में 250 प्लस में आपको यूपी में एडमिशन मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सो मेनी प्राइवेट कॉलेज आर देयर, द एक्सपेक्टेड कट ऑफ विल बी अराउंड 350 प्लस। अगर आपका 350 प्लस है, यू कैन गेट ए चांस इन बिहार और वेस्ट बंगाल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार जा रहा है। बट इन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु, उनका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ, कि उनमें काफ़ी कोटा है। सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट अपार्ट फ्रॉम डोमिसाइल, कुछ माइनॉरिटी कोटा, कुछ अदर कोटा भी है। तो 360 to 380 प्लस में आपको एडमिशन मिल सकता है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का प्रॉब्लम इज दैट उनका जो फीस स्ट्रक्चर है, जिसका माइनॉरिटी कोटा उनका फीस कम है, जिसका जनरल कोटा उनका फीस ज़्यादा है, इसीलिए एक्सपेक्टेशन बताना इज वेरी डिफिकल्ट। 320, 330 में भी आपको मिल सकता है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट आई कैन से। बट एट द लास्ट मोमेंट यू शुड वेट, एट द लास्ट मोमेंट यू कैन गेट ए चांस इन दिस 3 states। अगेन हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब, डोमिसाइल इज द मेजर कंसर्न। पंजाब में अगर आपका डोमिसाइल नहीं है, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर पंजाब में आपका 400, 420 या 430 प्लस है, लास्ट मोमेंट आपको मिल सकता है प्राइवेट कॉलेज। कुछ बच्चे को भी 350 प्लस नहीं मिला है, पर वो लास्ट मोमेंट तक वेट किए हैं, उनको मिला है। हिमाचल में भी सेम कंसेप्ट है। 50% सीट जो है हिमाचल प्रदेश स्टूडेंट्स के लिए है, रिमेनिंग 50% सीट जो है बाहर बच्चे के लिए है। तो जो 50% सीट जो हिमाचल का डोमिसाइल है, उनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ 320 प्लस, जो बाहर का स्टूडेंट है उनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ 360 to 380 प्लस। This is all about the expected cut-off of private medical college. And if you're talking about the fee structure, I've already covered up so many colleges, the fee structures. Thank you for watching us. Kindly like, share and subscribe the channel and don't forget to press the bell icon.